So welcome friends, very good evening. Hope you all are doing great. So this is Bharat here, your own friend. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज 19th ऑफ जनवरी को मार्केट में क्या हुआ और उसके बेसिस पे हम लोग क्या व्यू बना सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए और क्या मॉडिफिकेशंस हुआ टोटली आज जो हम लोग कल का व्यू लेके गए थे वो कैसे वर्कआउट किए. So before I start, I will try to put a kind of a connection or a watching, recommendation that अगर आप लोग कुछ भी व्यू के लिए किसी भी डेली समरी का वीडियो देखते हैं तो try to see the previous days or some prior videos because these are all getting interlinked. तो हम लोग जहाँ पे छोड़ के गए थे व्यू को वहां से हमने क्या लिया था, कल क्या चल रहा था और उससे आज क्या चेंज हुआ और उसके बेसिस पे क्या चल रहा है. तो दिस इज मच मोर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड. So that will be really helpful to understand the view on a broader scale, on a broader picture. If we go through all the videos, at least for that particular week, that will give you much more clear insights, which can be helpful for decision making going forward. So that will be just a suggestion. Let's get started with the Nifty first. So Nifty में अगर हम आज भी देखेंगे तो Nifty में अगर मैं zoom करके दिखाऊं आपको तो निफ्टी में आज भी जो है इसने कल का लो जो है इमीडिएटली एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे पहले 10 मिनट में ही कल का लो जो है वो ब्रीच हो गया था विच वी डिस्कस एज पर अवर प्रायर व्यू यस्टरडे. सो वहां पे व्यू होने के बाद तो इट वाज क्लियर कि आज का दिन भी हो सकता है कि निफ्टी वीक ही रहेगा. सो दैट वाज द केस. तो कल का जो लो है वो ब्रीच पहले 10 मिनट में हुआ. सेकेंडली जो है कल जो ये प्रीवियस वीक का लो है which we discuss at around 17,000, around 838 और 878 सॉरी. सो वहां के आसपास आज इसने आके दिन में टच किया है लेकिन अगर हम देखेंगे तो वहां से थोड़ा सा एक वीक दिख रहा है आपको डेली टाइम फ्रेम पे. हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ज्यादा क्लियरली देखेंगे तो वहीं से जाकर लगता है कि कुछ ना कुछ बाइंग देखा गया ऑन लोअर लेवल्स. सो लेट्स गो टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम टू build a view and to understand exactly what happened. सो ये अगर हम आज देखते हैं तो ये आज की पहली कैंडल है जो कि कल के लो को एकदम से ब्रीच करती हुई ही वी आर सीइंग इट. एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि आज जो 18,125 का जो हाई एट द स्टार्ट ऑफ द डे था वो पूरे दिन में हम लोग ब्रीच नहीं कर पाए. कंटिन्यूअसली वी हैड अ फॉल. सो एट द सेम टाइम इवन यहाँ पे हम लोग लग रहा है कि अब हम थोड़ा क्लोजिंग के आसपास में शायद बाउंस लेकर 18,000 के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन टुडेज क्लोज. बट लेट्स सी कि आज के ऑप्शन चेंज डेटा और ओआई डेटा के बेसिस पे कल के लिए या इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग क्या व्यू बना सकते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आज का लो जो है वो होल्ड करना कल के लिए भी और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर द लास्ट होप फॉर द दिस शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉर द बुल्स टू कंटिन्यू. Otherwise, there is a insights of strong grip of the bears, at least in the ultra short term, for few days it may last. So अब चलते हैं हम व्यू के लिए कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू बना सकते हैं आज के डेटा चेंज होने के बाद. सो अगर हम देखेंगे तो कल जो था वो 18,000 जो था वो एक स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर्स का डोमिनेंस था जो कि हम लोग कल भी डिस्कस किए थे और 18,200 तक उनका डोमिनेंस दिख रहा था. सो और उस टाइम पे वहां पे ही कॉल राइटर्स का एडिशन भी हुआ था कॉल्स का फ्रेश कॉल्स का. तो 18,200 को हम लोग रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे. एनीथिंग अबव 200 विल बी अ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी टू बैक इट. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो आज जो हुआ है वो ये हुआ है कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फ्रेश कॉल एडिशंस टू द ट्यून ऑफ 60 lakhs. तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स जो है 60 lakhs तक के आज जो है कॉल साइड पर ऐड हुए 18,000 स्ट्राइक प्राइस पर, व्हिच इन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि नाउ कॉल राइटर्स आर सीमिंग मच मोर डोमिनेंट एट 18,000. And put writers are seeing unwinding their positions at these strikes. So put writers are immediately looking strong on the strikes towards 17,700 to 17,900. तो आज का जो क्लोज है वो हमारा 938 के आसपास ही हुआ है. But still there has been seen some sort of put unwinding at these strikes. So अभी के लिए जो है अगर चार्ट के वाइज भी देखेंगे और अगर हम ओआई इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो इट लुक्स लाइक कि 17,600 700 से लेकर 17,900 तक का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में सपोर्ट दिख रहा है
और 18,000 जो है वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है बेस्ड ऑन द ओआई डेटा एज वेल एज द चार्ट्स आल्सो इफ यू सी हियर। सो लॉ ऑफ पोलैरिटी का जो है कंसेप्ट कल काम कर सकता है कि जो चीज अभी तक हमारे लिए सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो 18,000 या 18,100 के बीच में if at all we see some bounce, so that might get see be visible as a bounce being sold off if at all we have a bounce also some till the time we meaningfully cross 18,250 as we discussed in our prior videos. There is longs have to be avoided at this point in time. This is an overall broader picture of Nifty, what happened for today and what is expected maybe in the ultra short. सो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो हम लोग कल देख के गए थे या जो व्यू बना के गए थे, तो बेसिकली उसमें भी जो है आज का जो लो है, सॉरी कल का जो लो है वो आज ओपन के टाइम पे इन द फर्स्ट आवर इट हैज आल्सो ब्रोकन इट ऑन द लोअर एंड, सो व्हिच इन इटसेल्फ गिव दैट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कि आज बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक ही है। तो एट द सेम टाइम अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं तो दैट विल गिव अस अ प्रीटी क्लियर पिक्चर। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग कल यहाँ पे डिस्कस करके गए थे कि जो 38,131 का लेवल 130 प्लस का लेवल था, वहां पे हमने पिछले 3-4 बारी इमीडिएटली नियर शॉर्ट टर्म में अभी कहीं ना कहीं हमने सपोर्ट लेते हुए निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी को देखा था। बट नाउ वी वर एक्सपेक्टिंग कि या तो ये आज अगर शुरू में ही कल का लो तोड़ता है तो देन इट इज क्लियर कि दिस रेजिस्टेंस, दिस सपोर्ट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्ड। So which exactly happened today? So अगर हम फर्स्ट कैंडल देखते हैं आज, तो वहां से एक इमीडिएटली यहाँ पर आकर इस लेवल को टच किया 37,900 के आसपास का, एंड देन फाइनली उसके सब्सिक्वेंट फ्यू कैंडल्स के बाद इट ट्राइड टू गिव अ फॉल्स काइंड ऑफ इंप्रेशन ऑफ अ बाउंस टिल 38,330। सो वहां से फिर जो है दैट फॉल वाज क्लियरली विटनेस्ड, एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दिस 230 का कैंडल इवन दो इट वाज अ बुलिश एनगल्फिंग, लेकिन वी वर नॉट एबल टू मैनेज अ क्लोज अबव दिस 38,130 on an intraday basis, which in itself is clarifying or giving some early signs कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ पोलैरिटी काम कर सकता है, एंड 38,150 now should act as a strong resistance going forward in the ultra short term view. Still, the bank nifty looks relatively, strong, demonstrating strength as compared to nifty. So अब कल के लिए हम लोग या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी में क्या देख सकते हैं? So let's see that. So प्राइस एक्शन वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइस एक्शन वाइज वी आर लुकिंग that if at all आज का जो लो है that is around 37,850, वो अगर कल ब्रेक होता है फर्स्ट आवर में, so we will be certain enough, at least based on the data, there are high possibility or chances of moving towards the lower levels, and this is a major support which is around 37,440. So this might get tested if at all this, it might not be tomorrow only, it can be tested in the days to come. But the view remains if at all we breach the low of today in the first hour tomorrow or in the coming days, there is a high likelihood or a possibility to reach to see the levels of 37,440 in the immediate short term. Now coming to the OI part and the option chain data. So if we see, so 38,000 का जो कल तक जो था 38,000 strike पर put writers were dominant. So today it was seen that there has been a lot of fresh call additions on the same strike price of 38,000. So राउंड अबाउट 11.5 से 12 लाख के करीब जो है फ्रेश कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आज ऐड हुए हैं 38,000 स्ट्राइक। सो which in itself is indicating that now the tussle is moving on towards the 38,000 strike price, where PCR is just around 1.1 or 1.15. So which in itself is indicating कि वहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो मतलब इक्वल है, and they are still one party has to surrender. Which party will surrender, we will come to know in the coming days, whether the put riders will run for cover or whether the call riders will opt for unwinding. So based on that, we will see some sort of a directional move maybe.
once this consolidation zone of 38,100 to 37,850, which was the recent today's price action. तो वो अगर टूटता है एक साइड पे तो देन वी कैन सी, बट इमीडिएटली 38,500 जो हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन द अपकमिंग डेज. सो दिस इज अ व्यू फॉर द बैंक निफ्टी और जो आज हुआ उसके डिस्कशन के बाद. उसके बाद अगर हम लोग स्टॉक्स स्पेसिफिक अगर देखें तो आज कहाँ पे इस वॉलेटाइल मार्केट में भी कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है. तो द फर्स्ट इन द क्यू फॉर वॉच लिस्ट विल बी लाइक BSE. सो अगर मैं आपको BSE का चार्ट दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, तो यू कैन सी हियर कि दिस वाज अ बॉक्स कंसोलिडेशन. तो एक्चुअली ये जो है इसने आज इस कंसोलिडेशन को तोड़ा है ऑन अ हायर साइड. एट द सेम टाइम this was a kind of very strong supply zone, and this the today's close has been above this, right? 20, 100 plus. So now, even though some possibility of a pullback is not ruled out due to the volatile conditions in the market, but looks like in the few days to come it is a candidate for testing the all-time high of previous all-time high of around 2375. So can be kept in a watch list for doing the further watching the further price action. So second and the last stock for the day, which looks good, is a micro cap, uh, small cap, Cabra Extrusion, which I have been sharing on my Twitter handle. I have shared it multiple times in the recent past due to the price action, uh, which caught my attention towards this counter. So यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो it is moving in a very gradual fashion. यहाँ पर थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया, देन इट फर्दर स्टार्टेड इट्स अप मूव, और यहाँ पे भी जो है आज फिर से एक कंसोलिडेशन ही दिख रहा है जो एक इट इज वर्क गोइंग ऑन. सो ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस, ग्लोबल मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट it definitely is a strong counter based on the relative strength. So it looks like if at all any time we see the markets being supportive, so this is definitely a likely candidate for giving a fresh breakout above this consolidation zone of around 4 to 530. So it can be giving a short term movement towards the 600 590 levels. So this is all what I had for today, and whatever we discuss is purely with an intent for educational purpose to see how we can derive these levels, how the market gives us these sort of patterns and all, based on which we can improve our psychology and we can plan our decision making efficiently. So thanks a lot for watching. Thanks a lot for sparing your time. And if at all you like our content, please do not be shy to share it out with your friends and family, and like and subscribe to our channel. You can follow us on our Twitter handle at @Niveshak Bharat and Telegram channel as well. Thanks. Stay safe. Stay inside.